Good evening, everyone. Audible? I will Yes, share sir. the screen. Okay. Yes. Kaushal, ready for recording? Yes. Okay. So hope so. All of you fine, and your exam will be also best. Right. So we start the next semester two. So in this semester two, we have to start one of the subject VSC, vocational skill course. That is the web design. The guidelines they will be designed the is one of the subject web design. Okay. So first will be the see the title of your chapters. Different chapters are there. We study here and understanding one by one here. In the first chapter, we have to understand the fundamental of internet and principle of web design. Second, style sheet and graphics, page layout and navigation, JavaScript, JavaScript and events, jQuery and JSONs. सर मेरे को वॉइस क्लियर आवाज आ रहा है क्या बराबर what happens check your range okay I think So audio is cracking a little bit. okay actually net some problems maybe you have to listen now or not तो थोड़ा आवाज ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये ऐकू येत नाही ऐकू येते का क्लिअर नाही ब्रेक होतोय अटकतोय just wait let me check ओके okay audible so in this syllabus understanding the various things regarding the web design all of you are you know very well about the web sites you have to see the lot of websites you have to work out various websites and it's really helpful for the various users not only users it can be also used for the personally some college some doctors some also training so really very well for the today's helpful for the various people for websites so in course we have to start it how the basic things of that and what are the various languages you have to use to design your websites. It's very important. If you have to skill in the web designing, web development, so you have to jobs are theirs. Okay. Here, we have to know the in the different models are there in this syllabus. Model ones are the introductions about the HTML, understanding the HTML, how to write HTML, like that. So many things are important for the web designing. Then other the style sheets and graphics will be understood here. Next,
by using the style sheets, displaying the graphics, page layouts, creating the user form. It is very important for how to create a forms. HTML5 in the additional types in HTML5. In the model 2 is also one of the HTML is also scripting language, scripting markup language. Okay. Model 2 also we have to see the one of the JavaScript is one of the scripting programming language. So you have to see the operator statements, objects, how to write it, how to work it will be seen. Also, one of the basic jQuery you have to understanding what are the effects of the how it can be manipulated, attribute template, jQuery plugins are there. So these are the different contents are there. So let's start the first your understanding the fundamental of internet and principle of web design. So all of you know very well about internet. अभी सबको पता है कि इंटरनेट क्या है. Anyone say the what is the definition of internet? क्या हो सकता है इंटरनेट का डेफिनेशन? हम डेली इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन इंटरनेट का डेफिनेशन पता नहीं होगा तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका. Anyone for your side, what is internet? What are you thinking about the internet? To connect, yes. To connect not only single user, you have to connect a worldwide of users. It's a power of internet. A lot of people are connected to each other with the help of internet. Today's world is internet. Internet without internet, you cannot be do the lot of things you have to miss or play. So let's start first with the introduction part about that. HTML is the latest versions. HTML5 is the latest version of the hypertext markup language. तो HTML ये एक क्या है मार्कअप लैंग्वेज है. अब इसको मार्कअप क्यों बोलते हैं? The standard language for creating the web page, just designing the web page, creating the web page. Why it says a markup language? Because you have to marking something. Mark it in a rectangular sign. It is called as a markup. It includes the new feature improvement for the previous version. इसमें कुछ improvement किया गया, making it more powerful for building the modern web application. HTML5 was the first rated in the public facing on 22 January 2008. With a major updates and W3C recommendations is there. Status in October 2014. Its goals were to improve the language with support for the less-space multimedia and other new features. To keep the language easily readable by human and consistently understood by a computer and devices such as web browser, parser, and etc. So here we have to introduce the one of the latest new versions or latest version of HTML5. So before that, we have to see the definition of internet. Internet is one of the network. It connects the system to each others and easily sharing the information with the help of that. And easily communications with the help of TCP/IP protocols there. So that protocols
are helpful for there. So internet is one of the biggest network online. So what is network? Network means what? Connect computer to each others. There are different types of network. LAN, WAN, MAN. These are the various networks are there. And local area network, and wide area network, MAN metropolitan area network. So there is some limitations are there. So today's world is the internet and lot of and worldwide web and worldwide users. They are connected to each other and very well communicate, easily understanding, sharing the information with the help of internet. So yeah, we'll get to see the next about HTML is one of the hypertext markup language. They are creating the web page and a lot of improvements for these versions for there. So you are setting up the document structures. So what is the structure? How it can be write, how it can be create, how it can be designed. तो बेसिकली हमें ये जो वेब डिजाइनिंग है तो यहाँ पे पहले हमें HTML जो है स्टार्ट करना है. HTML it's a very simple. It's a designed web page, but it can be designed the static page. There are two types of websites. One is the static, another is the dynamic. So with the help of HTML, we have to just see and understanding how to design a page. So that page you have to design with the help of HTML or HTML5. So let's start here. How to set the document structures for the HTML. HTML is also one of the document. It is an internet document. तो एक इंटरनेट का डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है. The basic structure of HTML, hypertext markup language document, refer to the overall organization and syntax of HTML5. It contains of several elements that provide information about web pages, contains structure and formatting. So generally आपने वेबसाइट देखी होगी. You have to work out a lot of website. You have to see a lot of website. There are different uses are there, different purposes. You have to helpful for that website. तो वेबसाइट में जनरली होता क्या है? It will be provide the contents. That content should be a very well. तो ये हमें वेबसाइट के अंदर देखना है कि वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया गया, उसका लुक एंड फील, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ये हमें हम कल वेबसाइट देखते हैं बस. हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड. बट हाउ इट कैन बी डू. So you have to get the idea with the help of that. See the lot of website or place or anywhere, anytime you can see the websites. And you have to capture the, see in this also one of the important thing about the web designing, you have to the information. You have to understanding the page with the help of that. So designing is a very, very important part for web designers. अगर आपके पास कैपेबिलिटी होगी डिजाइनिंग की, बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, उनके पास ये एक आर्ट्स रहता है. So they are designing a web page. New things you have to introduce for a year. It is a very, very demanded for a year. You have to design the logo. You have to well artist. So you have to definitely you have to get a job in a web design. You have to design the logo. You have to design the page. It's a very demanded work. अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या आवाज बहुत? नेट तो चल रहा है वहां पे इधर. यस कौशल. So it's only breaking a little bit, but it's fine. It's audible. So I wanted to ask that you just
Excuse me, so so you were saying something about dynamic and static. Like, what are those Yes, in web designing? there are two categories of static and dynamics. Static means what? Just it a simple design. Okay. What about dynamic? So example of dynamic website is what? It can be a changes. Online changes are there. Rapidly changes you have to see for there. For example, share market. You know very well about the share market. They are fluctuated for the various times. So that data will be also fluctuated for there. Graphs is also changes. So this is nothing but a dynamic. That dynamic things are created with the help of different scripting languages. They are helpful for the dynamic things. And HTML is just creating the static page. Well, do you understand? Yes, sir. So static is only for HTML, and for dynamic, what do we use? We have to use some JavaScript, PHP, can use for there and make it dynamic there. You have to use some component you have to use for. Okay, thank you, sir. Okay, so document refer to the overall organization and syntax of an HTML file. It consists of several elements that provide the information about the web page. इसके अंदर बहुत सारे element होते हैं. What is the function of that? It can be provided the web page contains structure and formatting. So basic structure of HTML5 documents. So whenever you doc type declaration, start with less than sign or greater than sign. It is nothing but a tag. लिखते हैं उसको टैग बोलते हैं. ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये लेस देन और लास्ट में ग्रेटर देन. इसके अंदर एक एक्सक्लेमेटरी दिया है, डॉक टाइप एचटीएमएल दिखा है. Means what? Whenever the browser will be the understanding which type of document is here. So it is a HTML document. So in the first line, started your HTML with this tag. Okay. Declaration to the specify that this document is an HTML5 document. HTML element. Use the HTML tag to wrap your entire documents. Language attributes. बहुत सारे attributes रहते हैं हर एक elements के. Include the language attribute in the HTML tag to specify the language of the documents. कौन सी language specify कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, तो attribute set करता है. Head section is there also. The head section contains the meta information about the documents, including the title, character sets are there. So this is the beginning for your document of HTML. तो जब आप HTML लिखते हो तो ये आपको शुरू में ये information, it should be a compulsory or it should be optional. Okay. After body section. So body section is a main page, is a main content of the web page. जैसे कि इसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह बनाते हैं, इमेजेस डालते हैं, टेबल का यूज करते हैं, लिंकिंग का यूज करते हैं, वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं. तो बॉडी इज अ मेन पेज, मेन सेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज. तो जैसे कि यू नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, वर्कआउट भी किया होगा. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम अलग अलग पेजेस बनाते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी हमें अलग अलग पेजेस बनाने हैं. What are the different pages? What we are to design will be see here. Okay, specifying the document type. All HTML document must start with the doc type declaration. आप जब भी HTML लिखोगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे HTML का, तो उसका स्टार्टिंग इससे किया जाता है.
The declaration is not an HTML tag. It is an information to the browser about what document type to be expect. तो ये ब्राउजर के लिए स्पेसिफाई किया जाता है. ब्राउजर एंड developer should be also understanding for there. In the HTML5, the doc type declaration is a simple. तो खाली आपको इस तरह से ये लिखना है. HTML के शुरू में सीधा एग्जांपल. Doc type HTML, then again HTML. This is a tag. HTML tag. Head tag. Title tag. Title में आप क्या करते हो? टाइटल लिखते हो. क्या लिखा है? टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. Then this is for slash title means what? Closing tag. This is a title opening and this is a title closing. So most of the tag there is a starting या opening बोलते हैं and closing tag is there. So those tag is a opening and ending. It is called as a pair tag. ऐसे कुछ टैग है खाली ओपनिंग रहता है, उनको क्लोजिंग नहीं रहता है. तो टाइटल ओपन ईयर एंड क्लोज लास्ट में. उसी तरह हेड यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे एंड किया है. इसी तरह बॉडी यहाँ पे स्टार्ट किया है, ओपनिंग किया है. देन ईयर द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. आप इसके अंदर क्या लिखना है वो लिख सकते हैं. चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, tables, linkings, whatever it may be, you have design for them. Okay. After body close, तो वो सारे कंटेंट डिजाइनिंग करने के लिए आपको अलग अलग टैग का भी यूज करना पड़ता है. तो दिस इज अ टैग. बॉडी टैग, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मार्कअप. तो ये मार्कअप यहाँ पे किया जाता है और इसी को मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है. एंड इट यूज फॉर अ वेब डिजाइन एंड क्रिएटिंग द HTML. तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है. ये सिंपल एग्जांपल है. इसको सिंपली नोटपैड पे लेके आप डॉट HTML से एंड आफ्टर यू हैव टू सी ओवर द ब्राउजर्स. तो ब्राउजर में इसको आप शो कर सकते हैं. Creating the HTML. Creating an HTML document is a straightforward process. Here's step-by-step guide to help you create a basic HTML page from scratch. Step 1. Set up your environment. Text editor. You can use any text editor such as Notepad, VS Code, Sublime Text और एटम करके एडिटर का यूज कर सकते हैं आप. टेक्स्ट नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं जो भी है. नोटपैड है, VS कोड में भी कर सकते हैं, सप्लाई में या एटम करके. तो हम शुरू में नोटपैड देखते हैं. वेब ब्राउजर. You will need a web browser like a Chrome, Firefox or Safari to view your HTML documents. ये steps हुआ. Set up your environment. तो ये environment आपको पहले बनाना है. मोस्टली हर एक सिस्टम के अंदर ये होता ही है. Then steps to creating the new HTML file. Open your text editor, create a new file, save it with .html extension. For example, index.html. तो कोई भी HTML का फाइल किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? .html और .htm करके भी रहता है. बहुत सारा वैलिड. HTML भी चलता है या HTML भी चलता है. राइट द कोड HTML. उसके बाद कोड लिखना है यहाँ पे आपको. जैसे कि अभी देखो डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN मतलब इंग्लिश. ये एक एट्रीब्यूट है HTML का. राइट. हेड मेटा कैसेट UTF-8. मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0. अब ये जो
बट ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि लिखना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ओके, टाइटल, माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज, लिंक, आरएल is equal to style sheet, href is equal to style.css, optional link to css, head close body, header, welcome to my website, h1 is a header, h1 is a heading, nav is a navigation, ul unordered list, li, href is equal to hash about slash a, this is a anchor tag, li is a list tag, services contact, ul close, unordered close, navigation close, header close, main, section ID is equal to about, H2 about us, paragraph P. These sections contain the information about us P. Section close, section ID services. तो अलग अलग section के about us, then services, then contact, and it will be close for there. Main close function section close, footer, P and coffee 2024, my website close P, footer close, body close, HTML close. After save your file with the help of, make sure to save the file after adding the HTML code. ये सब ऐड करने के बाद इसको सेव करना है .html से. Open your HTML file in a browser. तो इसको नाम दिया index.html. Double click on the file, right click and select open with your preferred web browser. आप जो यूज करते हैं उसके अंदर उसको ओपन करना है. So after it will be view your page. You should be see your web page display the browser with the content you added. आपने जो जो बनाया है वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो सारा कंटेंट आपको वेब पेज में दिखाई देगा. Can we click on the navigation link and they will be take you to the respective sections. This is just simply you have to understanding the exam. So how can we create? Will we see the below some parts. Specifying a page title. तो टाइटल मतलब क्या, हर एक पेज का एक टाइटल रहता है, उसी तरह यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं टाइटल. Specifying the page title in HTML5 is done using the title elements, yeah, title tag, which is a place inside the head section of your HTML document. हेड के अंदर आप उसको प्लेस करते हो. The content of the title element is what appear in the browser tag. तो ये जो टाइटल है ये कहाँ पे दिखाई देता है आपको, ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है. ब्राउजर जो रहता है उसके ऊपर एक टाइटल बार रहता है, वहाँ पे ये टाइटल आपको दिखाई देता है. एंड इज आल्सो यूज्ड बाय सर्च इंजिन्स फॉर इंडेक्सिंग पर्पसेस. Example of specifying the page title. Here, how you can include the page title in a simple HTML5 document. Again, start your doc type HTML, HTMLX, EN. Its attribute is not a compulsory. It's just attribute, but you have to know about what is the attribute of that. जैसे अब ये HTML language ये attribute है. इसी तरह बहुत से टैग में attribute का यूज किया जाता है. Head, meta char set ये भी attribute है. UTF-8, meta name, viewport, content, width, device width, initial scale 1.0, title. My have some website, title close, head close, body, header, H1. H1 is a heading one. There are different headings you have to place for there. H1 to लेके H7 तक. तो उसका फॉन्ट H1 में ज्यादा, फिर कम 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 होते होते आपको दिखाई देगा. You have to put up H1 to H7 तक. So what are the effect we'll see there in the browsers. H1 is also closing, header is also closed, main paragraph. This is the content of my website, P, main close.
फुटर फुटर के लिए आपको क्या फुटर मतलब पेज के नीचे जो दिया जाता है फुटर। हेडर मतलब पेज के ऊपर जो रहता है वो हेडर। So this is a common thing you have to know very well about a page. Header, footer, text, left, right, center, margins are there. Footer close, body close, estimate. These are the all are the pair tag क्योंकि ये इनका closing आप ही है. The title element must be placed within the head section of your HTML. The text you place inside the title tag will be displayed in the browser tab. Browser tab के ऊपर आपको ये टाइटल आपने जो लिखा होगा वो वहाँ पे दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपके हमने लिखा था टाइटल माय awesome वेबसाइट टाइटल कोर्स will be show my awesome website in the tab. तो ब्राउजर जो टैब रहता है ब्राउजर का ऊपर जो टैब रहता है टाइटल बार बोलते हैं उसको वहाँ पे आपको ये नाम दिखाई देगा माय awesome वेबसाइट्स. ओके then let's start the next very important formatting text by using the tags. अब ये फॉर्मेटिंग मतलब क्या यू हैव टू वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि रिज्यूम बनाया होगा लेटर टाइपिंग किया होगा इनविटेशन बनाया होगा कुछ तो किया होगा तो वहाँ पे आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग किया और फॉर्मेटिंग मतलब क्या एनीवन आइडिया अबाउट दैट फॉर्मेटिंग क्या होता है यस व्हाट यू डू इन द So फॉर्मेटिंग in a systematic manner. सी योर नॉर्मल पेज जो नॉर्मल कंटेंट रहता है टेक्स्ट रहता है उसको आप फॉर्मेटिंग करते हैं जैसे कि कोई एक वर्ड है तो उसको बोल्ड करना है किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को इटैलिक करना है या इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेटिंग आप करते हैं सो दैट फॉर्मेटिंग यू हैव टू डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टैग फिर उसमें आपका मार्जिन आता है लेफ्ट अलाइनमेंट आता है लेफ्ट है राइट है सेंटर है व्हाट इट में भी आपको कैसा पेज डिजाइन करना है तो लेट्स सी द what are the various formatting tags text formatting tag use and how it can be implemented. Let's see. Formatting text by using a tag. In HTML5, you can be format a text using various tags that provide semantic meaning and style. Systematic semantic. Here's an overview of commonly used text formatting tag and how to use them. Commonly used क्या क्या होता है creating the headings. आप heading रखते हो HTML5 provide a 6 level of headings. 6 level के बताते हैं H1 से लेके हाईएस्ट वाला H6 तक रहता है हाईएस्ट जो है H1 है और H6 इज द लोएस्ट अभी हाईएस्ट लोएस्ट मतलब क्या फॉन्ट का साइज अगर आप H1 यूज करते हो तो उसका फॉन्ट साइज सबसे ज्यादा मिलेगा आपको दिखाई देगा और H6 आप करोगे या H2 H3 H4 H5 H6 तक करोगे तो आपको कम 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 वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा they help the structure the content and improve the accessibility see here H1 this is a heading 1 H1 close H2 this is a heading H2 close H3 this is the heading 3 H3 close applying the bold अभी ये हुआ हेडिंग के बारे में अगर किसी नॉर्मल टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है तो अप्लाइंग द बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेटिंग इटैलिक भी करना है तो बोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं बी बी फॉर बोल्ड बोल्ड टैग बी टैग बोलते हैं उसको फॉर अ बोल्ड टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ये बी टैग का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी लिखा है बी फॉर पैराग्राफ दिस इज द बोल्ड टैग
कोटेक्स क्लोज पी, ये भी क्या है, पेयर टैग है। पैराग्राफ भी पेयर टैग है, बोल्ड भी पेयर टैग है। सब मैक्सिमम टैग आर पेयर टैग। देन क्लोज। अभी इसका इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे खाली कोड लिखा है। ओके, इसका इफेक्ट हमें कहाँ पे देखना है, ब्राउजर के अंदर। अभी मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए फिर आर यूज करते हैं, आर टैग या इटैलिक टैग। फॉर इटैलिक टेक्स्ट दैट डज नॉट carry the emphasizes p, this is a r italic text, r close, p close। उसी तरह मुझे सब्सक्राइब करना है और सुपरस्क्रिप्ट करना है। Applying bold and italic, then you have to use the b and I. Applying superscript and subscript. What is superscript and subscript? अब मैथ्स में लिखते हैं x square, square is nothing but the superscript, और x of 2 को नीचे लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये हमें करना है, तो उसके लिए कौन सा टैग होता है देखते हैं। In the HTML file, you can easily format the text as super and subscript using the sub and sub tag. तो ये टैग है, ये भी क्या है, पेयर टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग, you have to write for them respectively. These tags are used to display the text at the higher or lower position than surrounding the text. अगर टेक्स्ट के ऊपर लिखना है या टेक्स्ट के नीचे लिखना है, हायर और लोअर पोजीशन में, तो हम ये क्या यूज कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट मतलब सब, मतलब सुपर मतलब ऊपर। Tag is used for superscript text which appears slightly above the normal text line. It's a commonly used for exponents in mathematics or footnotes. That's correct. Example of superscript. Paragraph P. The chemical formula for water is H2O. ऐसे लिखते ना, सबस्क्रिप्ट ये एक्चुअली H2O. So subscript SUB opening and closing and O. तो 2 हमें क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है, टैग के अंदर। किस टेक्स्ट को चाहिए, किस कैरेक्टर को चाहिए, तो कैरेक्टर आएगा, फिर टैग आएगा, और फिर आपको जो नंबर देना है वो लिख सकते हैं। इसी तरह P is equal to E is equal to MC square, Einstein's famous equation MC square, E is equal to MC square, superscript आएगा, C को स्क्वायर करना है ना। In this way you to write a subscript and superscript for here. Again example P paragraph. The molecular formula for carbon dioxide is CO2, subscript आएगा। Then in a mathematics the notation X represent the first element of the sequence, X1, superscript, subscript। यहाँ पे खाली B और P का फर्क है, B सबस्क्रिप्ट आता है, सुपर P आता है। उसी तरह मोनोस्पेस एंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। यूजिंग मोनोस्पेस एंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो अभी हमने ऊपर कौन से टैग देखे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट monospace and pre-formatted text. You can be HTML5, you can display the monospace and pre-formatted text using the code and PRE tag. The code tag
मतलब monospace and PRE मतलब pre-formatted tag respectively. These tags are useful for displaying the code snippets, कंप्यूटर आउटपुट लिखना है या snippets लिखना है or any text where white space and line break should be preserved. Monospace text tag code tag is used to indicate a fragment of a code or computer related text. It usually renders in the monospace font. Monospace font में, which is a typically used for programming code. Programming code में use होता है ये. Example of monospace text. Paragraph P. To declare a variable in JavaScript, use code let variable name is equal to value. Pre-formatted text मतलब क्या आप pre के अंदर जो भी लिखोगे वो as it is आएगा ब्राउजर में. Pre tag is used for pre-formatted text which preserve both the spaces and line breaks as they are in the HTML source. Text within a PRE tag is typically rendered in a monospace font. PRE function create console.log hello world. Because we have to use pre-formatted. That's why. Wait. Hello, audible na? Hello. Yes, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो 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 सुन रहा हूँ. Sir, you mentioned about this tags which are like greater than question mark, and then there are like greater than and slash. Like what do these indicate? So this is a tag. Basically, tag is used to design your page. ये टैग का हमें यूज करना है. अभी मोस्टली टैग में क्या होता है ओपनिंग और लास्ट में हम स्लैश देके उसको क्लोज करते हैं. इज व्हाट क्लोजिंग. So this is a pair tag. मतलब that tag should be open and it's closed. It is called as a pair. And all this tag is a markup language. That's why it is say as a markup language. इसी के कारण HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है और ये मार्कअप के अंदर हमें HTML के पेज बनाने पड़ते हैं. Do you understand? Yes, sir. So, but when do we use this slash and when not to use, and like when to use the question mark and all? Like there are some Mark, tags with question marks and all. no special character you have to use that time you have to use this. And see, we have to see the tag after you have to understand very well what effect could be there in a browser. Effect क्या होता है ब्राउजर में आपको दिखाई देता है. फिर आपको पता चलेगा अभी ये ओपनिंग क्लोजिंग जो रहता है मोस्टली ओपनिंग क्लोजिंग ही रहता है. ऐसे कुछ टैग है उसमें खाली ओपनिंग रहता है. देयर इज अ नो क्लोज टैग. तो वैसे कौन से टैग है हमें हमें आगे लिखना है. फिलहाल अभी टैग के बारे में आपको बताना चाहिए कौन से टैग है क्योंकि वही हमें यूज करना है. स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको दिखा है ना. Yes, sir. अनदर विंडो. एनीवन ओपन अनदर विंडो. कुछ ओपन मत करो. वापस में स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ बेटा. So this is a pre-formatted. Means what? Same. It can be rendered in the browser. There is no effect for these functions. Okay. उसके बाद using a list and backgrounds. अभी लिस्ट के बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप्स रहते हैं. कौन से टाइप रहते हैं. आप जब लिस्ट बनाते हो पहले स्टार देते हैं फिर लिखते हैं फिर स्टार फिर लिखते हैं फिर स्टार फिर लिखते हैं. ये एक लिस्ट हुआ. कोई क्या करता है नंबरिंग डालता है. वन टाइप्स. वन माउस. टू कीपैड. थ्री कीबोर्ड.
for monitor. तो ये भी एक लिस्ट हुआ, राइट? अभी लिस्ट, अभी ये नंबरिंग और ये स्टार, इसका मतलब क्या होता है? सो लिस्ट इज अ different way you are to creating. Star is nothing but the bullet, and number means what? Number list. So those lists are a number. It is called as a order list, and those number is a not number. It is called as a bulleted list. So HTML5 you can be create a list and set a background for element to enhance your web page. खाली आपने लिख लिया ये सब लिस्टिंग तो समझ में आएगा क्या? या तो स्टार लिखो या तो नंबरिंग डालो तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. So here we'll be understanding what is creating the bulleted and number list. Creating a bulleted list in HTML5 is a straightforward and is done using the UL. UL means what? Unordered list. Unordered मतलब क्या? वहाँ पे खाली बुलेट रहता है, मतलब नंबर नहीं रहता है. Tag along with LI. LI means what? List item. जैसे कि 1 mouse, 2 keyboard, 3 monitor, 4 CPU. तो ये लिस्ट के आइटम अलग अलग हुए, ठीक है? और आइटम हम एल के अंदर लिखते हैं. टैग फॉर ईच आइटम इन लिस्ट. हियर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड सम एग्जांपल्स. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड मतलब क्या? अनऑर्डर लिस्ट. तो यूएल से स्पेसिफाई होता है. यूएल टैग दैट इज दिस टैग डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द अनऑर्डर लिस्ट. इसका भी ओपनिंग है, स्टार्टिंग है. li is also tag. Each list item is wrapped in a li tag. Examples: bulleted list. Doc type लिखा, HTML लिखा है, meta लिखा, meta लिखा, title, bulleted list example, head close, body. H1 my favorite fruits. H1 अभी मुझे फ्रूट के नाम लिखने, तो अनऑर्डर मतलब बुलेट डाल सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ. li apple, li close, li banana, li close, li open, cherry, li close, li open grapes, li close, and ul close, body close, html close. So this is called as a unordered list. मतलब ये खाली लिस्ट आएगा और इसके पहले कुछ प्लेट्स वगैरह आपको दिखाई देगा. ओके, देयर इज नो नंबर. So what are these meta character sets and meta name? Information. Meta name means what? Viewport, content weights, device weight, emission. This is a not a compulsory, it's optional. खाली हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन. जैसे कि बेटा क्या से UTF-8. उसके बाद HTML लैंग्वेज इंग्लिश. कैरेक्टर सेट क्या है? 8. UTF-8. Viewport क्या है? इसका नाम Sir, language EN is for English, then there is something for Hindi also, like any short form for Hindi. only E value for here. Okay. We have to specify the any other language or any हिंदी वगैरह लिख क्या होता है, फिर आता है क्या लिख, ठीक है. नेस्टेड बुलेटेड लिस्ट. नेस्टेड बुलेटेड लिस्ट मतलब क्या? आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं. बुलेटेड लिस्ट. टाइटल नेस्टेड बुलेटेड लिस्ट, हेड, बॉडी, H1 माय फेवरेट फ्रूट्स. UL अनऑर्डर लिस्ट. LI फ्रूट्स, UL LI एप्पल,
banana, cherry, you will close ally, vegetables, you will carrot, broccoli, spinach, you will. Then ally, check it. हिंदी में आएगा क्या देखो आप. Milk, cheese. Okay. प्रैक्टिकल के टाइम ट्राई करके देखो क्या होता है इफेक्ट. ओके. You will close, ally close, you will body and HTML. तो दिस इज अ मतलब आप मल्टीपल भी क्या कर सकते हैं, यूएल के अंदर यूएल बना सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्टेड अनऑर्डर लिस्ट. जस्ट वेट 2 मिनट. डू नॉट पुट, जस्ट वेट टू. हाँ. हेलो हेलो, अडिबल ना. क्या है प्रिंट, क्या लिखा है पे. कौशल कुछ क्या लगता है. ठीक है. ओके ओके ओके. विल कंटिन्यू. उसी तरह लिस्ट के और एक टाइप है डेफिनेशन लिस्ट. यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट मतलब क्या, आप क्या करते हो, हेड लिखते हो फिर डेफिनेशन, हेड डेफिनेशन. और डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ टर्म्स. टर्म लिखते हैं आप, टर्म फिर उसका डिस्क्रिप्शन एंड देयर डेफिनेशन. इट कंसिस्ट ऑफ द डीएल. डीएल मतलब क्या, डेफिनेशन लिस्ट. टैग फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीटी फॉर each term and DD for definition description. Description or definition of the terms. Example. Title. Definition list example. Head, body, H1. Glossary of terms. DL. Definition list. DT. Definition term क्या है, HTML. इसका डिस्क्रिप्शन आया DD में आया. HTML hypertext markup language. Standard language for creating the web page. DD close. तो टर्म कौन सा आपका, HTML. उसका डिस्क्रिप्शन ये है. उसी तरह dt टर्म है CSS, ओपनिंग क्लोजिंग. तो ये टैग पता होनी चाहिए आपको, तभी आप ये बना पाओगे, नहीं तो नहीं. dd में आपको क्या करना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लेना है. कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन HTML dd. या dt वापस जावास्क्रिप्ट. dd description. JavaScript, a programming language commonly used for web development to create interactive effects within a web browsers. dd close, dr body, HTML. ये जो dr मतलब क्या होगा, tag start end. Definition list. dt is also used to start end for definition term, a term in the list. And dd is a tag is used for definition or description of the terms. तो ये 3 टैग रहते हैं, इसका ओपनिंग क्लोजिंग रहता है तीनों का. ठीक है. So that will be also see the practically how can we create. Inserting the special character in HTML file. Special character हमें करने हैं. You know the meaning of special character, like less than, greater than, and to display this character as a part of your contents. You can use HTML5 entities. Common special character and their HTML entities.
अगर आपको ये एम्परसेंड एंड कैरेक्टर देना है, शो करना है, तो एंड एएमपी यूज करना पड़ेगा। लेस देन होगा तो एंड एलटी, ग्रेटर देन होगा तो एंड जीटी, डबल कोट देना होगा तो एंड कोट, सिंगल एंड अपोज, नॉन ब्रेकिंग देना होगा तो एंड एनवीएसपी। ये टैग मतलब ये एंटिटीज यूज किए जाते हैं कैरेक्टर के लिए। See the example of special character is setting the special character. Title. Special character example. Head pose. Body. H1. Using special character H1. HTML5. HTML paragraph. HTML stand for and LT. मतलब यहाँ पे लेटर का सेट है। hypertext markup language and GT यहाँ पे ग्रेटर देना आएगा। Paragraph pose. Paragraph to use ampersand write it as an AMP. Paragraph quotes can be inserted using the add quote, comma, double quote, and quote. Double quotation में आएगा ये. And oppose, single quotes and oppose. Body close HTML close. So this is called as a special character insertion in your web page with HTML entities. Next, inserting the horizontal lines. मतलब आपने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखा है, कुछ डिजाइन किया, तो उसके बाद एक लाइन देना है, उसको बोलते हैं inserting horizontal lines. Inserting horizontal lines, choosing background and foreground colors. In HTML5, you can be insert horizontal line using HR. HR मतलब क्या? horizontal line बोल सकते हैं या horizontal ruler भी बोल सकते हैं. This tag creates thematic break in your contents, visually separating the section. It is often used to indicate a change in a topic. अगर टॉपिक चेंज हुआ है, पैराग्राफ चेंज हुआ है, या नया पेज करना है, नया डिजाइन करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. और टू सेपरेट द कंटेंट विद इन अ पेज. Basic usage of the HR tag. HR tag is self-closing tag, meaning it does not require a closing. तो ये एक self closing, इसका क्लोजिंग नहीं आता है. देखो, दिस इज अनपेयर टैग. तो खाली आपको क्या देना है यहाँ पे, H1 पैराग्राफ के बाद HR दिया. देखो यहाँ पे लाइन आ जाएगा. वापस पैराग्राफ पे HR दिया है, वापस पैराग्राफ दिया है, HR दिया है. बॉडी क्लोज HTML क्लोज. अभी ये तो सिंपल ही आपके टैग बताए, इसके एट्रीब्यूट भी रहते हैं. तो एट्रीब्यूट्स में और आपको उसमें इफेक्टिव कर सकते हैं. Choosing the background and foreground color in a HTML5 is primarily done using the CSS. CSS क्या है? ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ये आपको आ गया है. You can be set these colors for various elements on your web page. तो वेब पेज में आप अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं. To improve the readability and aesthetics. तो readability पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का यूज करते हो. बेसिक कलर सिंटैक्स. You can be specify the color in several ways. Name of the color, for example, red, blue, green. डायरेक्ट नाम भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल भी दे सकते हो, #F000 और रेड. RGB दे सकते हो, RGB 25500 और रेड. RGBA
or read with 150% transparency. तो ये सब अगर कॉम्बिनेशन से जस्ट हमें कलर का नाम दिया जाए भी चल जाएगा। Setting the background and foreground plus. तो ये वेरी वेल अबाउट द बैकग्राउंड तो पेज के पीछे रहता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर फॉर एलिमेंट यूजिंग द बैकग्राउंड Excuse me, sir. Sir, could you please repeat the topic before this? Before some basic color syntax. Yes, sir. This only this. below your design your page. You can be directly mention the name of colors. No problem. Otherwise, you can be also use the hexadecimal. But hexadecimal कोड हमें याद नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्टली कलर का नाम लिख सकते हो ओके या हेक्साडेसिमल आपको पता है तो हेक्साडेसिमल लिख सकते हैं बोथ आर वैलिड आरजीबी में चाहिए तो आरजीबी में कर सकते हैं आरजीबी ए इज आल्सो देयर एचएसएल करके भी है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं लेकिन इतना हमें रिमेम्बर नहीं रहता है तो हम डायरेक्टली कलर का नाम देके उसको सेट कर सकते हैं सेटिंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स तो ये सेट कैसे करते हो हम देखते नीचे you can be set the background and foreground color for element using the background color and color property in CSS अभी ये CSS का मैं बताया एग्जांपल स्टाइल का बताया अभी ये स्टाइल क्या होता है ये आपको पता नहीं है स्टाइल दे दिया है ठीक है तो अभी यू नो वेरी वेल अबाउट द बैकग्राउंड बैकग्राउंड पता है सबको क्या होता है बैकग्राउंड में हम कलर सेट करते हैं फोरग्राउंड कलर मतलब क्या टेक्स्ट का कलर जो होता है वो फोरग्राउंड कलर तो उसकी प्रॉपर्टीज है सीएसएस में बैकग्राउंड कलर और कलर खाली अभी देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर टाइटल कलर एग्जांपल स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड डैश कलर कोलन देखो यहाँ पे डिसेबल दिया है लाइट ग्रे बैकग्राउंड आएगा इससे हैश एफ ओ अब ये बैकग्राउंड किसका आएगा बॉडी बॉडी मतलब पेज पूरा पेज का बैकग्राउंड कलर आएगा लाइट ग्रे बैकग्राउंड उसके बाद कलर कोलन हैश 333 कोलन अब ये स्टाइल लिखा गया अब ये स्टाइल क्या होता है एक शीट रहता है फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है डार्क टेक्स्ट कलर फॉन्ट डैश फैमिली एरियल सेंसिटिव पैडिंग 20 px ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल बना रहे H1 जो रहेगा उसको बैकग्राउंड कलर आएगा #007 बी इफेक्टिव बैकग्राउंड फॉर द हेडिंग नहीं तो हम डायरेक्टली कलर का नाम दे सकते हैं अभी रेड ब्लू ग्रीन व्हाटएवर ओके कलर व्हाइट इनको देखिए अभी है कलर व्हाइट पैडिंग 8 px border radius 5 px rounded corners P for paragraph पैराग्राफ के लिए फिर बैकग्राउंड कलर व्हाइट है कलर #555 डार्क ग्रीन टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ पैडिंग दिया उसमें पैडिंग अराउंड द पैराग्राफ्स 10 px बॉर्डर 1 px दिया है सॉलिड लाइट बॉर्डर #DDD बॉर्डर रेडियस 5 px राउंडेड कॉर्नर तो ये सब स्टाइल से और इसका इफेक्ट पेज में होता है H1 में H1 का इफेक्ट आएगा पैराग्राफ में आपने जो स्टाइल दिया है उसका इफेक्ट आएगा so this is for the background foreground color you go to set with style background dash color and color creating hyperlinks it's very important and anchor tags
तो हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, एक पेज दूसरे पेज को कनेक्ट किया जाता है। दिया ना, फ्रेंच भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, स्पेनिश भी है। देखो क्वेश्चन में ढूंढ के निकाला है, इफेक्ट आया वहाँ पे उसका ब्राउजर में हिंदी आया था वर्ड? नहीं सर, कोड इंग्लिश में ही था। ठीक है, मतलब इट्स विल नॉट इफेक्ट। ओके, अच्छा, बीच बीच में हिंदी आ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए भी हम अलग यूज कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसफरेंसी के लिए। तो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग हाइपरलिंक एंड एंकर्स। अभी एचटीएमएल मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या? पेजेस, जिसके अंदर हम अलग अलग टेक्स्ट लिखते हैं मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके। क्रिएटिंग द हाइपरलिंक्स मतलब पेजेस के लिंक एंड एंकर इन एचटीएमएल इज एसेंशियल फॉर navigation within a web page and between the different pages on the web page। मतलब in shortly लिंक देना। हाइपरलिंक टू द वेब पेज, क्रिएटिंग द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको एंकर टैग का यूज करना है। इसके एट्रीब्यूट है href, specify the URL of the page, the link goes to here, basic hyperlink, title hyperlink example, head, body, welcome to my page, p visit a href http www.example.com, example website /e, anchor close for more information। तो यहाँ पे वेबसाइट एग्जाम्पल वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे example.com पे जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं, या आप हमारे लोकल पेज जो रहते हैं बनाने वाली HTML वाले, वहाँ पे तो आप सी कोलन टेक्स्ट डॉट HTML, सी कोलन फर्स्ट पेज डॉट HTML, लाइक दैट, more information, body close, HTML close। This is a create a link to www.example.com. It takes between the opening and closing anchor tag, in this case example website। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको ये ऐसा ब्लू स्क्रीन आएगा, ब्लू टेक्स्ट आएगा, अंडरलाइन आएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन आएगा और यहाँ पे हाइपरलिंक है, आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे आपको माउस लेके जाना है, तो एक हैंड आता है ऐसा। हैंड का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक होता है, मतलब उस पे कुछ तो भी लिंक सेट किया गया है। ओपनिंग द लिंक इन न्यू टैब, अगर न्यू टैब में आपको ओपन करना है लिंक को, तो वहाँ पे आप टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये भी एक एट्रीब्यूट है, टारगेट इज इक्वल टू स्लैश ब्लैंक। तो इससे क्या होगा, आप क्लिक करोगे वेबसाइट एग्जाम्पल वेबसाइट पे, तो ये न्यू पेज पे आ जाएगा। So got this understanding this point of hyperlink, all of you? You have to create a practically this, then you have to better understanding. Okay. Yes. Do you understand hyperlink? बंद करो ऑडियो क्यों आपका। मैं क्वेश्चन पूछा आपको कुछ। Do you understand hyperlink or not? इस टेबल क्रिएट करो इसका। यस सर। न्यू विंडो में ओपन करने के लिए न्यू टैब में टारगेट इज इक्वल टू स्लैश ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। उसी तरह
ये एंकर टैग का हम इंटरनल लिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। You can be create an internal link to navigate that navigate to specify section of the same page using the anchor. Suppose आपका पेज बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपने बहुत सारे चैप्टर लिखे हैं, तो उसमें भी हम नेविगेशन पर्पस के लिए हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंटरनल लिंक्स के लिए। Steps to create anchors. Define the anchor, use the ID attribute on the target elements. Define the anchor, use the ID attribute on the target element. Create a link, use the anchor tag position pointing to the ID. Example using the anchors. Title anchor example here. Body H1 navigation example. P. Go to a href for section 1, section 1, anchor close or section 2. H2 ID equal to section 1, section 1. This is the paragraph, this is the first section of content. Section H2 ID section 2, section 2 H2. This is the सेकंड सेक्शन ऑफ द कंटेंट। अभी ये एक छोटा सा पेज बनाया है, लेकिन सपोज सेक्शन 1 में बहुत सारे कंटेंट है, सेक्शन 2 में भी बहुत सारे कंटेंट है, आपके 4-5 पेज भर गए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेक्शन 1 पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेक्शन 1 पे आएगा आपका पॉइंटर। सेक्शन 2 पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेक्शन 2 पे आएगा आपका पॉइंटर। तो दैट इज यू हैव टू क्रिएटिंग द आईडी। ये आईडी जो रहता है सेक्शन 2 यहाँ पे हैश सेक्शन 2 लेना पड़ेगा आपको बस। ये प्रैक्टिकली वर्कआउट करके देखो आप, इट्स वेरी मस्ट। जब आप कोई भी पेजेस बनाते, लास्ट पेज बनाते हैं, तो टॉप में जाना है, बॉटम में जाना है, डायरेक्टली उस पे जंप होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये इंटरनल नेविगेशन के लिए आप एंकर टैग का यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो आईडी स्पेसिफाई करना है। तो H2 heading to ID section 1, this define the target section with the ID of section 1. A href section 1. This create a link that when click and jump, directly वो jump करेगा to the element with the ID section. जहाँ पे ID section 11 होगा वहाँ पे वो jump करेगा। Creating hyperlink to an email address. डायरेक्ट ईमेल एड्रेस को भी क्या करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए ये टैग है, specify the address. Anchor tag. If you have any question, feel free to anchor tag. href मतलब क्या, hypertext reference। कौन सा रेफर है आपको, मेल टू कोलन example @example.com, email me, anchor close, paragraph close, body close, html close। डायरेक्टली इस पे ईमेल मी पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो मेल टू में आएगा, राइट। हाइपरलिंकिंग टू अदर कंटेंट्स। Hyperlinking to other contents in HTML file allow you to connect your web page to other sources। अलग अदर रिसोर्सेज को भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, such as external website, internal pages or downloadable files। Here how to do it effectively। Hyperlinking to external website। To link to an external website, use anchor tag with href attribute set to the URL of the site। Doc type HTML, HTML language EN। ठीक है, मेटा कैलसेट, मेटा नेम, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड, बॉडी, H1 वेलकम H1, P विजिट A href http://wikipedia.org, target is equal to underscore blank Wikipedia, anchor close। For more information, close paragraph।
बॉडी टेस्टिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली विकिपीडिया को स्पेसिफाई करेगा ये एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक्सटर्नल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टेड एंड यू टू इजीली यू टू इंप्लीमेंट इट। खाली आपको टैग पता होना चाहिए तभी आप हाइपरलिंक सेट कर सकते हो। इज इट राइट? इंटरनल भी सेट कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। डिफरेंट वे यू टू सेटिंग योर हाइपरलिंक। इंटरनल पेज को भी आप कर सकते हो। To the link to another page within your website, use a relative your URL in the attributes. H1 welcome H1. Go to the href about.html about us page to learn. तो यहाँ पे about.html पेज आपका होना चाहिए। डायरेक्टली हो वहाँ पे उस पेज को ओपन करेगा। Hyperlinking to download downloadable files. You can also create a link to downloadable files such as PDF or images. Doc type HTML, HTML language EN, head, meta cassette UTF-8, meta name viewport content width, device width, initial scale 1.0, title, downloadable file example, click file.pdf, download here पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड जाएगा। डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, तो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप फॉर योर लोकल मशीन। इस लिंक्स टू द पीडीएफ फाइल डाउनलोड एट्रीब्यूट करके लिखा है यहाँ पे। This attribute prompt user to download the file instead of navigating to it. डाउनलोड करेंगे आप नेविगेट कर सकते हैं। लिंकिंग टू स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द पेज, स्पेसिफिक सेक्शन में हमें डायरेक्टली आना है तो भी आप वो कर सकते हैं। देखो जैसे ऊपर आपका एग्जांपल है सेक्शन 1 है सेक्शन 2 उसी तरह आईडी क्रिएट करके कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक फॉर या टू डिजाइन योर पेज। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ है आज। इसके एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करो, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। वेब पेज बनाओ एंड ट्राई इट, ओके, एंड सी द व्हाट इफेक्ट फॉर योर ब्राउजर्स। तो उसका इफेक्ट क्या होता है ब्राउजर में, किस तरह से पेज वहाँ पे रेंडरिंग होती है, शो होती है, वो आपको पता चल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, जो कोड यहाँ पे दिया है खाली उस कोड को नोटपैड में लाना है और ब्राउजर में उसका इफेक्ट आपको चेक करना है। So you have to understand incorporation. It's very important for the beginning of web page designing. Basic of web page designing is important. क्योंकि ये सब टैग पता होने चाहिए आपको, तभी आप डिजाइनिंग कर पाओगे। Otherwise it is not possible to design your page. Will do. Any question regarding this session? You can be asked. Otherwise, will be continue for the next session or next chapters. Will do. किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? नथिंग? इसके अलावा भी बहुत सारे टैग रहते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं वेब पेज डिजाइन के लिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आज का सेशन हम स्टॉप करते हैं। हाँ, वो नेक्स्ट इसमें आएगा ऑडियो वीडियो। पीडीएफ में एग्जाम होला आता पीडीएफ पाठवू शकतात का तुम्ही टेलिग्राम चॅनल वरती? हाय दिस पीडीएफ पाठवली का ऑलरेडी? ऑब्जेक्ट पोस्ट चाहिए थे मॅडम ने पाठवली प्लीज। Yeah, PDF is there already. Practice, then we will clear our doubts later. Yes, sure, definitely. You have to practice, must.
देन उसमें कुछ आता है इश्यू तो ये बताओ। और सेंटर के तो प्रैक्टिकल अभी चालू हो जाएगा अपने। सेंटर में जब बुलाएगा आपको, तो सेंटर वाइज़ ही आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करने हैं। ओके? विल डू। So we'll stop here today's session. Okay, bye. Take care. Thank you, all of you.